Assalamu alaikum. Do you hear me, Moby? Moby's Kitchen, are you there? Do you hear me? I'm just trying to go to my page here and see if I am there. I'm also running the... Okay. Let's see. Oh. Yes, I'm live now, Moby. Moby's Kitchen. I'm over here. Okay. Let's see if you can see me. Assalamu करती हूँ. अस्सलाम वालेकुम. आवाज आ रही है? आज मैंने वाईफाई बंद कर दिया है और मोबाइल के डाटा से जा रही हूँ. मुझे बता देना है अगर पिक्चर जो है वो ठीक आ रही है, आवाज ठीक आ रही है तो बता देना. I'm good. अल्हम्दुलिल्लाह. आवाज ठीक है? ओके. लाइट्स भी ऑन करती हूँ. ओके. आज वाईफाई बंद कर दिया है. आज ऐसे ही फोन के डाटा से जाऊंगी बिकॉज वाईफाई बहुत ज्यादा परेशान कर रहा था. 2-3 दिन से बहुत लैगिंग हो रही थी. So hopefully this will work. Angel's Army with us. Hi Angel, how are you? Thank you for coming. We are going to be making some sweet potatoes and we have tuna to go with it. It's a simple yummy recipe. Let's hang out. Alrighty guys, I'm already going ahead boiling the sweet potatoes right there on very low heat. If there is any, yeah, it's on. Okay, I have all the ingredients lined up for my simple lunch today. It's simple, it's yummy, and it's family favorite. So I'll make it with you guys. Thank you, Angel. I'm happy to see you too. Alrighty, let me get the laptop close by. I think the internet is okay today. I'm so happy to see it's not lagging like past few days. That's good. So that's what we have. Moby, how is the internet behaving? Are you seeing it without buffering? On my end, it looks okay. It looks okay from my end. But you guys have to let me know because yesterday internet was not good and I couldn't figure it out. No buffering. Okay, good. So we are not on Wi-Fi. We are on the phone data. Okay, so I have the tomato paste. I have a little bit
zest here. This is lemon pepper. Goes very good for the seafood. I have two kinds of tuna. I will use bumblebee. I have not tried this, excuse me. I have not tried this brand, so I'll go with the bumblebee, 2 cans. What else goes in is sea salt, peanut butter. Can't have it without peanut butter. So we have extra lemon, we have chili peppers, and we are ready. Okay, good. No buffering, perfect, it's good. Okay, I'm happy to hear that. Because I was so tired of, just buffering. We will use a little bit of olive oil. No deep frying in this kitchen today. So let me just open this ahead of time while we have friends coming over. Just 1 second, let me wipe it off. Thank you, guys. Okay. Thank you. I'm always, I don't know if I'm obsessing. I'm always trying to wipe off the cans with wet paper towel or wash it under the water because I don't know how long they've been sitting there. Let me bring everything to the counter so it gets easier from here. This needs opening, this needs opening, and the cans need opening. So let's do that first. I'll be right back in the chat. Let me just open the cans and get this out of my way. How are you doing, Angel? There you go. I open it this way because you just put it back, you press it down, and your can is ready to go in the refrigerator. That's why I use those. I use this can opener. It's a little hard to open with this can opener, but once you do it, you can just close the can right back and put it in. The weather is gotten cold over here. Same thing, let me just wipe them off. I should have done that earlier, but it's a slow morning. It's a Friday morning, everybody's taking it slow. We have a guest over this morning. All right. Moby's Kitchen is saying, friends, keep messaging so we know you are with us. Don't forget to hit the bottom. My camera changes its color, its lighting with the weather. When it gets too dark outside, automatically the camera goes dark. So I just saw it happen. I didn't know what was happening. Now I'm keeping an eye on these things. It just went dark on me. And now it's back. Cooking and Spice here. Hello, Chef. How are you? Thank you for coming. We are making a simple dish today.
that my mother and my husband loves very much. The boys too, but okay, let's open the can. I'm boiling sweet potatoes. We can also fry them, but no fried food today, so I'm just going to plain boil the sweet potatoes, make a sauce with tuna, tomatoes, and peanut butter. It's very, very delicious. Okay, let's see if it's open. Yep. How is everybody doing? It's taking a little bit of time. This can opener, I don't know why. Okay, got it. I'll be right back with you guys. Just give me a second. For some reason, I'm always draining the tuna. It doesn't matter how I cook it. I'm always draining the water. I think I don't like the smell of it. I'll be right back with you guys. Just give me 1 second. I don't like the smell. Okay. You will not hear too much from outside today, all that noise, because it's windy and cold. So I have closed the window, but I still hear the ambulance. Alrighty. So let's see who is with us. Angel's link is there. If somebody wants to make friends with Angel, go ahead. Chill with Dorian and Scout is here. Hi. How are you doing? Super active family. How are you? How are you guys doing? Hello to everyone. Thank you. Thank you for the thumbs up, guys. Thank you very much. As usual, we are just in chilling mood. Slow mode, if you want to call it, because we had a busy morning. So lunch is coming along slowly and very simple, very delicious. Just going to do the same. 2 to 3 tablespoons of olive oil. We're not going to add too much. Traditionally, this dish, I have eaten it in Africa. When I was growing up over there in Sierra Leone, they used to make it. That fish sauce is very, very, very rich. They use palm oil and peanut oil, and they make it very, very rich and tasty, very flavorful. But as for me and the circumstances and a different word, different place, I'm not going to make it too heavy. So I'm just going with the olive oil. But I'm just letting you guys know where it's coming from. I just have a slice of onion, and I have, I'm going to take 2 or 3 garlic from here. So, and the sweet potatoes are boiling right in here, slowly boiling. So they do it in Sierra Leone. They do it 2 ways.
They do it two ways. One way is boiled sweet potatoes. It's a street food. You can call it a street food. And I don't know now. I have been out of Africa for a very long time, so I can't say what goes on now. But I'm talking about back then. You can find it on the street. They will take a newspaper and they will put your sweet potatoes there, fry or boil. It's your choice. And then just pour a lot of fish sauce over it. And that fish sauce was amazing. You cannot take those flavors out of my mind. The flavors that I grew up with in Africa, they were amazing. Just amazing. You know, very rich food. And the palm oil and the peanut oil are the best. I don't think they have any concept of using olive oil over there at that time. I don't know about now, but back then, every food in Africa and Sierra Leone was cooked in peanut oil or palm oil. And the richness and the flavors were amazing. I still remember. So I'm just imitating according to new times. All right. I think let's add a little more garlic. There are 4 cloves of garlic. You can use 2, you can use 3, depends on your taste. I don't mind garlic. So we are going to let that get brown before we bring the fish in. It is delicious, Moby. Sufyan Akbar is here. Sufyan Akbar, Assalamu alaikum. How are you? Welcome. Welcome to my live stream. This is our lunch hour. Thank you for coming over. We are making lunch. और हमारे साथ कौन है? कौन से फ्रेंड्स हैं हमारे साथ? High smoke points. Both oils are very high smoke point. You mean peanut oil and palm oil? Yes. But the way they cook it over there, if you taste it, you will never forget. You will never forget. It was so flavorful. The food was amazing. Even I was young, but I still remember how much we used to enjoy it. It's changing color a little bit more, and we will start adding the stuff in it. For heat, guys, I'm using 1 habanero pepper. That will be more than enough. Then I will use 1 mild green one just for the color. I'm going to cut it with the scissors so I don't get it in my hands. All right, Dorian, you are here. I'm sharing my lunch with you guys. You're more than welcome. It's so simple. It's so simple. It's so budget friendly, and it is so flavorful that you make it once, you will make it again. Let me take the seeds out of the pepper. And I don't see anyone objecting to it because everybody loves it. But what I like is I can make it very fast. It's simple, it's delicious, and everybody is happy. Let's toss the pepper in there so it can release some of that heat and flavor in the oil. This one is just for show and tell. It's very mild. If you don't like chopping the peppers with the knife, go ahead and just do it like that. Use your kitchen shears, kitchen scissors, whatever you call it.
love pepper. Me too. One is a hot pepper. The red one is very, very hot, and the green one is very mild. But we need a little bit of heat in this recipe. You can use a fish, a fresh fish, or you can use any canned fish. When I'm like this, I don't want to bother too much. I just go with the canned tuna. Little bit of cumin is optional. I love cumin. I love the flavor of it, so I always use it. And I always add it when it can fry with the peppers and everything. All these things in the oil right now is making the oil very fragrant, coming together. You can see. All right. We could add, fresh tomatoes, but I'm not going to do that. Right about now, add a few spoons of tomato paste. That's 4 because this is, I'm not using palm oil, I'm not using peanut oil, so I'm going to go with the tomato. It's a little bit like pasta, a little bit heavy on the tomatoes. That's 5 teaspoons full. Doing the same. Yes, I know hot pepper, but the long one looks so different, like sweet. Yeah, the long one is not hot. The long one is just over there for the flavor and the color. It's not hot. Not at all. It's just there to make a little bit of extra flavor and add a little bit color to it. So we are going to add a little bit water in this and let it cook before we add the fish. That's like half a cup of tomatoes. While this is cooking, let me check on the sweet potatoes. Maybe they are done. Just to bring everything together, let it cook. It's so funny. I told my husband to get me a few things. I didn't have the peanut butter, so I said, get me the peanut butter. I'm making the fish and sweet potatoes. He brings it, goes in the living room, he's sitting down. So I asked him, do you want breakfast? And he's like, oh, yes, it's my favorite breakfast. I said, I'm giving you eggs and corned beef. And he's like, no sweet potatoes? He actually thought I have magic. I can just pick stuff out of the bag and food will be ready. He was expecting it for breakfast. Sufyan ka link lag gaya hai. Sufyan ka link. Anybody wants to make friends with Sufyan? His link is there. Bushra Papeer आ गई हैं. अस्सलाम वालेकुम बाजी, कैसी हैं आप? आज मैं बना रही हूँ अपना फेवरेट बचपन का डिश अफ्रीका का टूना फिश बना रहे हैं टोमेटो सॉस के अंदर और साथ स्वीट पोटैटोज बॉईल कर रहे हैं. ये मेरा और मेरी मामा का बहुत फेवरेट जो है ना फूड है. अब महमूद को भी बहुत पसंद है. 2 कैन टूना के लिए हमने आधा कप टोमेटो का लिया है. ओनियन और गार्लिक को फ्राई किया है जरा सा जीरा और वो डाल के. Let me check on the sweet potatoes. I think they are boiled. Let me try to fish one out. See if it's done. Yep. Sweet potatoes are done. I asked him to bring this kind of sweet potatoes and he got those. So
That's the one they use in Haiti. So, you know. Okay. Time to add a little bit of salt. Sea salt. You can use any salt you want. Not too much. Just around half a teaspoon. A little bit of lemon pepper. It's very much needed in any seafood dish. Gives it a zesty flavor. हमारे साथ कौन फ्रेंड्स हैं मैसेज करें मैं अभी आके देखती हूँ मेरे साथ कौन कौन है मैं यहाँ से बस जरा भी we are cooking the tomato sauce. Okay. Yay! Ami Jan aa gayi hai. My mom is here. I know she loves. She figured it out what's cooking. I can tell. She figured it out so fast. That's her favorite dish. ये मेरी मामा का favorite dish है. साकिया आपको welcome कह रहे हैं. जो सुफियान अकबर है यहाँ पे न्यू है सुफियान अकबर आप मेरी कम्युनिटी के ऊपर you can leave a message there so when I'm finished with the live I will go over there and I will you know I will follow you from there so छोटा सा message कर दें कम्युनिटी के ऊपर Bishop Avin कह रही हैं जज़ाकल्लाह मोबिन साकी Amtu Shukur कह रही हैं my favorite dish thanks see I knew it okay now we are going to add the one ingredient you cannot make this dish without. That's peanut butter. I love the chunky one. Always, always, always. You cannot make this dish without peanut. And I'm going to take advantage of some of the peanut oil. Let me just use 1 spoon. There was the flavor. I just enhanced the flavor of my dish. Okay, we have 1 tablespoon full of peanut butter and I'm just going to add another half. See how simple that is? Now this is going to turn to amazing. If it was good before, now it's going to be amazing. Excuse me, let me have a sip of water. This is optional. You don't have to follow what I'm doing in this one because this is totally optional. This is a little more heat with the hot pepper oil. Moby's kitchen को अच्छा लग रहा है. वो कह रहे हैं looking awesome. Thank you. Thank you, Moby. It smells awesome too. It smells way better than what you see here. There is no smell-o-vision, you know. I wish there was. So we have to make sure the peanut butter is one with the tomato sauce. Onions, garlic, tomato, cumin, salt and pepper, a little bit of lemon zest. Let me taste the salt. It's good. Okay, now with the peanut. Oh my God, that's good. Okay. Oh, you don't like tomato sauce? You can use fresh tomatoes. You can use less. You can just use, you know, a little bit more onions, more. But it works magic with the peanut butter.
It just comes together so nicely. Our fish is already cooked, so we are not going to put it through torture, otherwise it will turn into paste. So we will make the tomato sauce. When we think it's nice and ready, then we will add the tuna fish and we will let it rest on slow heat. So it depends how thick you want it. Like I said, it's a street food. They make it nice and thick. They put the sweet potatoes on a newspaper and then they pour this sauce right on top of it. And it all goes together so well that this dish was in my childhood and I could never forget it. I'm still hanging on to that taste. This is going to cook for a few minutes. I can smell the peanut butter now mixed with everything. Let's take the sweet potatoes out from the pan. बाजी बुशा कह रही हैं तलहा likes this dish. तलहा के लिए फिर बनानी पड़ेगी. Yes, मामा मैं यही एक्सप्लेन कर रही थी थोड़ी देर पहले कि palm oil and peanut oil. अभी देखें मैंने थोड़ा सा peanut oil चुरा के इसमें डाल दिया. Palm oil and peanut oil is the best. But if you don't have it, then if you go to Asian market, you can always find from the Asian market, Chinese market or any other Asian, you can find the peanut oil. Palm oil you have to go to the area where you can find it. But I have never seen it here. That kind of palm oil that they have in Sierra Leone, I have not seen it. मुझे तो नजर नहीं आया. So sometimes I make it with peanut oil and sometimes I use the lemon pepper. And I'm also going to squeeze a little bit of lemon juice in it. Lemon goes very good with these things. Let's see if I can squeeze a little bit of lemon. हमारे साथ और कौन से friends हैं? Peanut oil. Yes, peanut oil is very fragrant. It's very, it gives your food amazing flavor. The Asian foods, the Chinese, they cook in peanut oil. And the Korean too, I think. Thailand, they use a lot of peanut oil. So if you happen to go in a market, Asian market or Chinatown, you can pick up peanut oil from there. You can easily find it in Chinatown. Because they make most of their dishes in peanut oil. The coriander is going to release some flavors to it. We have drained out the water from the tuna, so almost all of it. You can use a fish. You can use a fresh fish from the fish market. I don't find any close by, so I'm just going with tuna. It's just as good. If you have any other canned fish, you can go with it. The fish was already cooked, that's why I didn't bother too much. It's nice and ready in the can, so you don't need to bother too much. Cooking and gupshup आए हैं हमारे साथ. Cooking and gupshup कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम and welcome.
It's already in small pieces, so we're just going to let it cook in here. Gently going to move it around. This is not a tuna I'm used to. I like the one with the chunks. But hey, whatever I can find close to my home. Oh my God, it's good. Guys, I just tasted it. The flavors are out of this world. You have to make it to know what I'm talking about. You have to make it. So, let's wipe the thing and let it simmer. Slow heat. ठीक है, हल्की सी हीट के ऊपर अब इसको पकने देंगे. आप उसकी शक्ल देख लें, अच्छी हो गई है. The zesty flavor from lemon pepper, the tuna, the peanut butter, the tomato sauce, everything came together with the heat of the habanero pepper. We are good. Mobi क्या कह रहे हैं? This is exactly what we are doing here. Welcome Cook and Gupshup को कह रहे हैं. वालेकुम अस्सलाम कह रहे हैं. Cook and Gupshup कैसी हैं आप? Yeah. Yes, Moby, I wish. I promise next time I'm over there, you can catch a nice fish and we will do it even better. You know, we will make it even better. If and when I can get over there. अब यहाँ पे local travel के लिए भी we need a clearance from the doctor 48 hours before we travel, even it's domestic traveling. We need a clearance for corona. I didn't know that. Someone told me. They said you will have to go to your doctor, you have to take clearance from them. And if you are negative, then you can travel. And I don't know what's going on. I will see. I will try to go to the doctor this weekend. See if I can. There you go. That's what we want. We want it to simmer slowly. Yes, Moby, if we make it with the fresh fish, there's nothing like that. So I'm moving on to the sweet potatoes and going to drain the water. Yes, बिल्कुल आपने सही कहा. Life is becoming very hard. And doctor business is on. Absolutely. You know, I didn't know. I wanted to travel, you know, domestically, and I was not expecting this. You know, that they will tell me to go get a clearance. And this is from one state to another state, you know. I don't know what's going on. Doctors are happy. Business is booming for them. Okay, so I'm bringing you guys to the table so we can peel the sweet potatoes and talk at the same time. There you go. I'm going to put it on a piece of paper towel. Let's cover the tomato sauce. I don't want the tomato sauce to splash all over the stove. So let that simmer because it's almost ready, 99% ready. And you guys tell me how simple was that? Simple. It's very budget friendly and it's extremely delicious. Everybody has peanut butter at home. Sweet potatoes are easily found. Tomato sauce or fresh tomatoes are always in the house. And what else? Salt, pepper. That's all. We didn't need too much of anything. Very inexpensive and very delicious. Let's just... If you think the sweet potatoes look weird, don't blame me. Blame my husband. He picked them up. I even went so far to tell him, can you get me some good-looking not peanut butter, the sweet potatoes?
and he comes home with this. Well, because this is the one they use in Haiti. I have no idea how they are different from the one that I know. You see how thin the peel is? Oh my goodness. My idea of sweet potato is this, guys. This is the kind of sweet potato I use. And this is what he likes. I know. They are not only teeny tiny ones. He says they are very, very sweet. And he says that's the one they are used to in Haiti. So what am I going to say? He says this is what we call batat. So when I told him, I hope he's not listening. He's beginning to tune in when I'm live, and he's beginning to hear what I'm saying about him. And the other day he's like, so that's what you, all those things you say about me when you're online. I say, oh, good. So I got your attention. It's hot. It's hot. It's hot. Looks good. It's nice and very soft. I will taste it in a little bit. Let me just peel them first. Hot, hot. And you my sauce कौन है while we are peeling this potato is Arabic for potato. Oh, okay. What do you know? What do you know? The whole world is somehow connected. When I tell him to bring sweet potatoes, he says, oh, batat. मुझे तो पता ही नहीं अब क्या बोलना है उर्दू बोलनी है इंग्लिश बोलनी है फ्रेंच के लफ्ज़ इधर उधर क्रियोल के घूम रहे होते हैं मेरे आसपास so that's sweet potato for me and batat for him. He is waiting anxiously. He loves this. I introduced him to sweet potato and the fish sauce. I'm the one who introduced, and now he thinks that that's his favorite dish. हाँ जी इसको बहुत गर्म है और बहुत छोटे छोटे हैं Moby's kitchen is right they are very छोटा छोटा pieces छोटा छोटा teeny tiny little ones. They smell good. Honestly, when I go, I pick the sweet potato that I'm used to, and he thinks that's not sweet potato, that's a yam. So today I had to ask him to get it for me, and this is what I got. The one we had in Africa, they were so sweet. When you peel the skin off, you can see the syrup underneath the skin. And I'm not making that up. In Sierra Leone, in Africa, the sweet potatoes were something you will never forget if you eat them over there. And I speak about lifetime ago. I don't know anything about now what goes on over there. There you go. Our pepper soup is simmering slowly. Who is with us? Cook and Gupshup. Review cookies too. Cook and Gupshup. आपको चिल विक्टोरियन ने आपके लिए एक पैकेट छोड़ा है. आप उसको जब आपको हो सके तो आप उनको रिटर्न कर दें. She left you a package. I don't even know anymore. Cookies, package, dancing, painting. We do everything. We dance, we bake, we cook, we paint. We do whatever it takes, right? वो आपके लिए कुकीज छोड़ के आई हैं आप भी रिटर्न कर दें go ahead and return them. Okay जी ये almost there guys almost. This is the only big one. It has thread in it though, so that tells me he's right about the sweet potatoes. I feel the threads in it.
Batat. I would like to know what other names are there for sweet potatoes. I know in Urdu we call it shakar kandi because shakar is sugar. Shakar kand, I don't know why it's kandi, but maybe it's Mobi's Kitchen can explain. Shakar is sugar. So it's sweet. Sweet potatoes over there in Asia are very sweet too. Oh boy. Even though I'm not used to this. We used to have cassava over there and we used to have sweet potatoes. So cassava was also boiled like that in Africa. I don't like this one. It was big, but I have to take pieces off of it. It's more starchy than I'm used to. The starch is not clinging to my hands, but I can feel it. It's very starchy. All right, the last one. The one I'm used to, the shakar kandi. You can just peel it with your hands. The skin just peels off. You just press a little bit, move it around, and the skin peels off. Anyways, we adopt accordingly to whatever is available at the moment. There you go. Don't want to leave any of those black spots behind. Yep. This is more cassava like. It's very starchy. Let's take that away. फ्रेंड्स जो हमारे साथ हैं, हमारे साथ जो फ्रेंड्स हैं, छोटे छोटे नसरीन किचन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम. हाउ आर यू? कैसी हैं आप? थैंक यू फॉर कमिंग. अच्छा लगा आपको यहाँ पे देख के. कुछ दिन से आप नहीं आई थी, मैंने कहा शायद आप भूल गई हमें. थैंक यू, थैंक यू. हम आज बना रहे हैं स्वीट पोटैटो का डिश बना रहे हैं. हमने स्वीट पोटैटो बॉईल किए हैं. And with the sweet potatoes, we are making a sauce with the tuna fish, tomatoes, peanut butter, and some spices. अच्छा, ठीक ठीक ठीक. That's okay. आप आ गई, बहुत अच्छा लगा. Mobi's का लिंक लगा हुआ है. If somebody is not familiar with Mobi's Kitchen, you can make him a friend if you want. Link is right there. Go ahead, grab the link, and you know what to do. You can bake, paint, you can cook, you can dance, whatever you want to do at his house. All right. Okay. All right. All right, Chill Victorian. That's okay. That's fine. All right, guys. Let's check on the sauce. Bismillah. All righty. That's coming along nicely. Let me see if I can find a different spatula or a spoon or something. Probably it's in the dishwasher. So I have to check in the dishwasher. Well. I'm going to organize the kitchen on the weekend. इसको देख लें एक नज़र. This is how it's looking. Let me hold the camera here. It's nice and thick. This is fish, peanut butter, tomato sauce, tomato paste actually. You can use tomato sauce, you can use fresh tomatoes. Coriander for extra flavor. Hot pepper. And let me just taste it. It's all coming together.
I think another minute or so and we're done with this. बहुत मजे का बन गया, बहुत ही मजे का. अगर आपको स्ट्रीट फूड का मजा लेना है, so boil some sweet potatoes, make this sauce, pour it over. Let me bring the plates out because this is almost done. Yum yum and yum. मेरी मामा को पता है मैं क्या बात कर रही हूँ. So good. चस्के वाला यमी हो गया, खट्टा खट्टा. We added tomatoes and some lemon pepper, lemon juice, onion, garlic, zira, and that's what we got. Badi Busha getting nice. Thank you, Badi Busha. मैं प्लेट्स लेकर आऊँ तो फिर मैं आपको डाल के दिखाती हूँ. अरे 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 लाइट मूव करनी पड़ी है. काफी कुछ इसके अंदर पड़ा है डिश वॉशर में. बहुत ही simple steps, very 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 simple steps. Nothing complicated, nothing you cannot do, nothing you cannot buy. I don't even think it cost me, it's under $10. 2 cans of tuna, a slice of onion, few cloves of garlic, few spoons of tomato sauce, tomato paste actually, and 2 peppers. How much can that be? And the sweet potato. So it's under $10. The whole lunch is under $10. Where in the world can you go outside and buy yourself a lunch for 4 people under $10? Am I right? Let's add a little bit more. Right here. It's hard when the camera gets in my way. A street food, a family favorite from my childhood. I give it to you with a little bit of changes according to time. I don't know what they do with it over there now. I have no idea. And we have our sweet potatoes ready. Let me get a plate so I can dish it for you in a very, very simple way. Like I said, it's a street food. Let's push this on the side so it's not getting in my way. We don't have I will be right back with you guys. Just grabbing a few plates. Okay. और हमारे साथ कॉन्फ्रेंस हैं. We give it to God. Yummy, yummy कह रही हैं. Thank you very much. Yes, it's very yummy. It's very yummy. बहुत मजे का है. The sweet potatoes हैं. I'm going to cut the sweet potato right in the plate, and I'm hoping it's good from inside. You can cut it like that. No, this is not the color I'm used to. हमारे जो होते हैं शकरकंदी का कलर क्या होता है?
मैं जब से यहाँ आई हूँ मुझे तो भूल गया शायद. मैं बड़ी वाली खरीदती होती हूँ, and then I cut it from the middle, and then I just pour the sauce over it. But this one is a little bit more starchy. My husband is gonna love it because he's used to it. This sweet potato, but I don't know. हमारे कैसे होते हैं मामा? मुझे याद नहीं आ रहा. ये sweet potato more cassava की तरह है. It's very starchy. It gets better from here. Once you place it, I'm not doing the newspaper. Even though that's what I want to do. I just want to pick up a piece of newspaper, and it just want to do the street food thing. Well, living here in America, you know what's good, what's not good for your health. So just sprinkle a little bit of sea salt on it, not too much, just to give a little something to the sweet potato. Not too much, because we have a sauce that's very, very yummy. Let's take some of that sauce. Let's pour it over. I'm being sloppy here. But then again, this is street food, and street foods are sloppy. Oh, this is good. गर्मा गर्म आपके लिए हाजिर है शकरकंदी फिश और टोमेटो सॉस के साथ. उसके इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो मैं नीचे लिख दूंगी. I will, inshallah. So if you are interested in making it, you can just check out. There is one more thing that is going to go on top of it. If somebody knows, let me know. Let me just wipe that off. वो भी खुश हो रहे हैं, कह रहे हैं looks amazing. Cassava has very rough skin and more sugar. कसावा तो बहुत जगह पे कसावा जो है ना सोमालिया में भी और अफ्रीका में भी हमने देखा था. इट्स अ सब्स्टिट्यूट फॉर आटा, फॉर ब्रेड, यू नो. बॉइल्ड कसावा, कसावा पाउडर, कसावा ब्रेड. कसावा हमने बहुत खाया हुआ है. Sometimes when he goes out, he gets me some of the cassava because he knows I'm used to it. We can find the cassava bread here in Brooklyn. Sorry for me being sloppy, but yeah, it's a sloppy food. Okay. अब आप मुझे बताएं कि इसके ऊपर अगर आपने कुछ स्प्रिंकल करना है तो वो क्या होगा? Any ideas? No? मैं देखती हूँ किसी को याद आया कि नहीं आया? It looks delicious, which I had tasted. I know. I wish I can make you guys taste it. ये तो बहुत ही मजेदार है. इतना मजे का है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ. If I can remember this from my childhood, that means it's really good. थोड़ा सा lemon, little bit of lemon juice goes amazing, amazing, amazing on sweet potatoes. And if somebody wants extra, just leave a slice on the side so they can grab it and do it according to their own taste.
भूख लगा दी आप लोगों ने मुझे। आपको देख के मजा आ रहा है, मेरा हाल सोचें। मुझे उसकी खुशबू भी आ रही है। हम तो शुक्र कह रही है, गुड जॉब माशाल्लाह। ये आई गॉट अप्रूव्ड बाय माय मदर, शी यूज्ड टू मेक इट एंड दैट्स हाउ आई नो हाउ टू मेक इट। बाजी बुशरा कह रही हैं लुकिंग नाइस, थैंक यू बाजी बुशरा, जज़ाकल्लाह। Something you cannot do is on internet is the you cannot judge the taste. You can be a judge, but you know what, guys? Give it to God कह रहे हैं, it looks delicious. और बुशरा परवीन कह रही है नाइस, मामा कह रही है गुड जॉब। ओके, मैंने आपके सारे मैसेज देख लिए हैं, थैंक यू वेरी मच। मैं ढूंढ रही हूँ फोर्क, और मैं क्या ढूंढ रही हूँ, कोई भी चीज जो मैं आपको कॉम्प्लिकेटेड नहीं बना के दिखाती हूँ। आई डोंट रिमेम्बर मेकिंग एनीथिंग कॉम्प्लिकेटेड। जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें होती हैं वो मुझे बनाने का शौक नहीं है, ठीक है। मुझे शौक है इजी चीज़ों का, और मेरा दिल करता है आप लोग भी बनाएं और खाएं। हमारे पास क्रैनबेरी जूस है, आज डाइट क्रैनबेरी जूस है, फ्राइडे है, एंजॉय करेंगे। बहुत अच्छा होता है आपकी हेल्थ के लिए। पहले मैं नहीं पीती थी, लेकिन अब मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपके लिए बहुत ही मुफीद होता है, आपकी बॉडी के लिए। थोड़ा सा कड़वा है टेस्ट में, little bit bitter, but it's so good for you, keeps you away from a lot of problems. मोबी मुझे लगता है इंटरनेट फिर गड़बड़ कर रहा है, राइट? थोड़ा सा स्लो हो गया। मैंने रखा था यहाँ पे। देखें, जैसा मैं आपको प्रॉमिस किया 1 घंटे के अंदर मैं आपको बना के दिखा देती हूँ, राइट? 1 आवर के अंदर अंदर मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। स्लापी काम हुआ है, लेकिन बहुत मज़े का काम हुआ है। आपने इसको ऐसे तोड़ना है, और आपने इसको स्वीट पोटैटो के साथ और सॉस के साथ उठाना है, और सॉरी आपको दिखाने के चक्कर में खा गई। बहुत मजे का बना है, आप प्लीज बनाइएगा और मुझे भी जरूर बताएं कैसा बना। ये मेरे बचपन का फेवरेट है, मेरी मामा बनाती थी, अफ्रीका में बनाते थे इसको एज ए स्ट्रीट फूड। मुझे याद है घर में भी बनाते थे और मार्केट से भी मिल जाता था। तो जब आप ग्रोसरी वगैरह करने जाते थे तो अब कागज़ के ऊपर, न्यूज़पेपर के ऊपर वो डालते थे स्वीट पोटैटो, और उसके ऊपर वो ये फिश की सॉस डाल के तो आपको देते थे, और बहुत ही मज़े की होती थी और घरों में भी बनती थी। सो मेरी मामा ने बनानी शुरू की, उसके बाद से बस हमारे घर का एक ये बन गया है फेवरेट डिश। अब तो मेरे बच्चों को और मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद है। ठीक है गाइस, हमारा आवर पूरा हो गया। अगर आपने भी थोड़ा सा हैंग आउट करना है, बातें करनी है, तो वेरी गुड, लेट्स डू इट। अब मैं फारिग हूँ, आपसे बातें कर सकती हूँ। मोबिस किचन से भी पूछ लेते हैं, उनके पास टाइम है कि ख़त्म हो गया। आज ठंड थी, हमने खिड़की बंद कर दी है, बहुत ठंडी हवा आ रही थी अंदर, इसलिए थोड़ी सी कम नॉइस आ रही है। नसरीन किचन कह रही हैं ज़बरदस्त, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। वाकई ये बहुत ज़बरदस्त डिश है, आपको ज़रूर बनाने। देखें, बहुत सिंपल चीज़ें हैं। किसी भी मार्केट में, इन एनी वेयर इन द वर्ल्ड, यू कैन फाइंड स्वीट पोटैटोज, यू कैन फाइंड कैन्स ऑफ टूना, और यू कैन जस्ट बाय a good piece of fish, so you can make the
दिस डिश सो इजीली। और पीनट बटर तो होता है घर में बच्चों के लिए, राइट? ऑलवेज घर में पीनट बटर भी होता है। थोड़ा सा हमने पीनट बटर डाला था, 1.5 टेबल स्पून। हमने 4 टेबल स्पून फुल करके डाले थे टोमेटो सॉस के। और अब इंटरनेट जो है वो हमारा स्लो हो गया, तो ज़रूर बनाइएगा। मैं कोशिश करूंगी कि जब ये होती है ना, प्रोसेस ख़त्म होता है, तो मैं उसके नीचे फिर लिख दूंगी इंशाल्लाह। वो इतनी देर लगाते हैं उसको रिलीज़ करने में कि उतनी देर में मुझे भूल जाता है कि मैंने क्या करना था। थैंक यू बाजी बुशरा, आप भी बनाएं, बहुत पसंद आएगी आपकी फैमिली को भी। शकरकंदी तो हम सबको वैसे ही पसंद होती है, एवरीबॉडी लव स्वीट पोटैटोज। और ये जो सॉस है ये भी इतनी इजी है बनानी। अभी आपके सामने ही बनाया मैंने, देखें 1 आवर के अंदर अंदर पूरा हमारा लंच जो है वो रेडी हो गया। सॉस भी बन गई हैं, स्वीट पोटैटोज भी बॉयल हो गए हैं, और हमने आपको दिखा दिया कि आप भी इसको जल्दी से बना सकते हैं। मोबी आप हमारे साथ हैं कि आपको कॉल आ गई है? अगर आपको कॉल आ गई है तो ठीक है, मैं भी बस फिर इसको चंद मिनट में बंद करती हूँ। मैं आज फोन से जा रही थी ना, क्योंकि फ्यू डेज से हमारा बाकी स्लो हो गया इंटरनेट। हाँ, स्लो हो गया। मैं इसको रिफ्रेश करके देखूं, पता नहीं क्या हुआ। फ्रेंड्स जो हमारे साथ हैं मैसेज करते जाएं। अगर कोई फ्रेंड मैसेज नहीं कर रहा तो इसका मतलब ये है कि हमारे साथ कोई भी नहीं है। कोई फ्रेंड्स हमारे साथ हैं। मुझे लगता है मोबी की कॉल आ गई है, उनका जॉब भी होता है इस टाइम पे। अगर कोई फ्रेंड्स हैं तो मुझे थोड़ा थोड़ा करके मैसेज करके बताते रहें। मैं ये भी बताएं कि आपको आप बनाएंगे कैसा लगा। जी नसरीन हमारे साथ हैं, थैंक यू नसरीन। अम्मी जान हमारे अब तो शकूर हमारे साथ हैं, वो भी कह रही हैं जी। सब फ्रेंड्स ने मुझे, अगर अगर आपको अच्छी लगी है मेरी कुकिंग तो मुझे छोटा सा गिफ्ट दे दें, थम्स अप का। इफ यू लाइक व्हाट आई डिड, इफ यू लाइक माय कुकिंग, डोंट फॉरगेट टू गिव मी थम्स अप। दैट वुड बी अ लिटिल बिट ऑफ गिफ्ट फॉर मी। बहुत शुक्रिया आप सबका, जरूर बनाइएगा। वी गिव इट टू गॉड। आप हमारे साथ हैं, आर यू स्टिल विद अस? Yeah, I think Moby's kitchen has he might have a phone call or something because he's working. ठीक है, 1:30 पे इंशाल्लाह इसको हम बंद कर देंगे। इट्स हेल्दी एंड टेस्टी। हेल्दी टेस्टी तो बहुत है, यमी भी बहुत है। स्वीट पोटैटोज आर बेटर देन रेगुलर पोटैटोज, वो हेल्दी भी है। बस इसमें वो जो थोड़ा सा डलता है ना पीनट बटर वगैरह, तो पीनट बटर आई डोंट थिंक इट्स बैड फॉर हेल्थ, इट्स गुड। अगर आपको माफक आता है तो पीनट बटर अच्छा है, नट्स तो अच्छे होते हैं ना। और हमने इसमें ऑलिव ऑयल यूज़ किया, पाम ऑयल वगैरह नहीं यूज़ किया जिस तरह वो अफ्रीका में करते हैं ना, तो आप उसको हेल्दी बना सकते हैं। मैंने थोड़ा सा वो बस उसके ऊपर से लिया था 1 टीस्पून पीनट ऑयल का, और दो टेबलस्पून मैंने डाले थे ऑलिव ऑयल के, तो वो ठीक हो गया। जी बिल्कुल, अच्छा लगता है। अगर थोड़ा सा ये ऑयली हो तो और ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन मैं तो इसको कोशिश कर रही हूँ कि मैं जिन चीज़ों पे कट डाउन करना है उन पे करूँ अपनी अपनी हेल्थ के मुताबिक। लेकिन आज फ्राइडे था तो आज हमने मज़े किए हैं। ये हमारे फ्राइडे की चीटिंग हो गई आज की। ईमान से अगर मैं खाने लगी तो मैं ये सारा खा जाऊंगी, स्टॉप हो जाना चाहिए। मुझे बहुत ही पसंद है, ये मेरा और मेरी मम्मा का फेवरेट है, और अब मेरे हस्बैंड और बच्चों का भी फेवरेट हो गया।
लेमन जूस, लेमन जेस्ट डाल सकते हैं इसमें। मैंने लेमन पेपर डाली थी और फिर थोड़ा सा लेमन जूस भी डाला था। पीनट इज गुड फॉर हेल्थ। जी पीनट अच्छा है, लेकिन किसी किसी को एलर्जी होती है ना इससे, तो उसका सब्स्टिट्यूट क्या हो सकता है ये पता नहीं, क्योंकि जो उसका अपना एक फ्लेवर है ना पीनट का इस सॉस के अंदर, वो कोई और चीज उसको नहीं रिप्लेस नहीं कर सकती। कुछ लोगों को एलर्जी होती है पीनट से, कोई तो ऐसी चीज होनी चाहिए जो उसको रिप्लेस कर सके। Coco Empire is here. Coco Empire, hello and welcome. Thank you for coming over. Oh, you are at work. Okay. Okay, thank you. I appreciate that. Thank you very much. Thank you for doing that. I understand when you are at work, you have to do what you have to do. We're not staying that long. 1:30 and another 20 minutes and we will close it. अम्मी जान हम तो शुक्र कह रही हैं। अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज मामा। थैंक यू, आप आई और आप हमारे साथ स्टे किया आपने। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। आप भी बनाए, आपको तो मेरे से अच्छा बनाना आता है ये। मैंने वो इंग्रेडिएंट्स बताए हैं आप सबको, just the very basic and very simple ingredients that everybody can find anywhere in the world. There's nothing here that you cannot find, and all that is under $10. So yeah, it's a win-win, you know. Make enough and enjoy. All the best कह रही हैं। Thank you, जज़ाकल्लाह। अभी ये सब गायब हो जाएगा, जैसे लाइव बंद होगी ना सब गायब हो जाएगा, डोंट वरी। इंशाल्लाह उसके बाद वीकेंड है। Moby's kitchen is busy, otherwise I could have asked him. I know Moby's kitchen is live on Saturdays at 11 a.m. for 3 hours, and you know he looks at our channels, he tells us how to improve ourselves, and he also cooks and bakes. So if you guys want to hang out with him tomorrow, go ahead, you can do so. लाहौर 1 पाकिस्तान है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। सलाम कह रहे हैं, सलाम ऑल, पाकिस्तान जिंदाबाद। बिल्कुल जी, पाकिस्तान जिंदाबाद। लाहौरी आ गया है जज़ाकल्लाह, शुक्रिया, मेहरबानी आपकी। हमने आज एक अफ्रीकन डिश बनाया है, अपना फेवरेट बचपन का। हमने शकरकंदी के ऊपर फिश की सॉस बना के टोमेटो में डाली है, खट्टी खट्टी सी मज़े की, एक स्ट्रीट फूड की तरह हमने बनाया है। आप भी शामिल हो गए, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह आने का। अभी हम इसको 15-20 मिनट्स में इंशाल्लाह ख़त्म कर देंगे। उतनी देर तक जिसने कह रहे हैं होस्ट गुड, होस्ट जज़ाकल्लाह, यू आर वेरी वेलकम। बहुत ही मज़े का हमने खाना बनाया है। आप पाकिस्तान में भी बड़ी आसानी से बना सकते हैं। ये शकरकंदी उबालें और फिर प्याज और जो है ना प्याज और लहसुन को थोड़ा सा फ्राई करके ज़रा सा उसमें नमक और ज़ीरा डालें, फिर उसमें टमाटर काट के डाल दें या टमाटो सॉस या टमाटो पेस्ट डाल के अच्छे से मसाला बना लें। हरी मिर्चें डालें उसके अंदर, और जब वो सारा हो जाए तो वो जो कैन वाली फ़िश होती है वो खोल के अंदर डाल दें। मेरी लाइव का टाइम है 12 बजे न्यूयॉर्क टाइम, आफ्टरनून। ये लंच आवर होता है ना हमारा, तो मैं लंच आवर में फिर लाइव आ जाती हूँ। जो लंच बन रहा होता है फैमिली के लिए वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। जी मैं यूएसए में हूँ, न्यूयॉर्क में हूँ। सो न्यूयॉर्क टाइम 12 o'clock पाकिस्तान के हिसाब से क्या होगा? क्या आपका रात का टाइम है? डिनर का टाइम है शायद, राइट?
तो मंडे टू फ्राइडे में आती हूँ, ठीक है। मंडे टू फ्राइडे 12 बजे से लेके तो 1:30 बजे तक, 1:30 या 2 बजे तक। बाज़ दफ़ा फ्रेंड्स हैंग आउट करे होते हैं तो हम 2 बजे तक रहते हैं। 1 घंटे में हमारा खाना बन जाता है, फिर हम आधा घंटा गपशप करते हैं। बहुत शुक्रिया आपके आने का। अगर किसी और को इंटरेस्ट है यहाँ के खानों में, मज़े मज़े चटपटे खाने या न्यूयॉर्क के खाने, तो आप प्लीज़ हमें उसके साथ शेयर कर सकते हैं। आप बता सकते हैं उनको टाइमिंग्स, अगर आपका जी चाहे तो। अब अपने घंटे तो हमने पूरे करने हैं, तो घंटे पूरे कर रहे हैं हम साथ मज़े मज़े के खाने बना के। 10 बजे हैं इधर। अच्छा, आपके वहाँ के 10 बजे हैं रात के, है ना, कि सुबह के? मुझे, मैं इतने अरसे से पाकिस्तान नहीं गई कि मेरे ना टाइमिंग सारी ऑफ हो गई हुई है। लाहौर वन पाकिस्तान हमारे साथ हैं। If somebody wants to make friends with him, if you guys are still here, you can go ahead and search him out. If Moby's Kitchen comes back, Moby's Kitchen will, आपका लिंक लगा देंगे, लेकिन Moby's Kitchen अभी यहाँ पे नहीं है। तो इफ आजकल वैसे भी मेरा ख्याल सर्च करना ज़्यादा अच्छा है। अगर किसी के लिए लाहौर वन पाकिस्तान न्यू है and you want to make friends with him, you can go ahead and you can search him out and make friends with him. मैं तो आजकल लिंक से बहुत डर गई हूँ। मुझे जिसके पास जाना होता है मैं सर्च करके जाती हूँ। मेरे बहुत गिरे हैं, बहुत गिरे हैं, 4 दिनों से हर रात को गिर रहे हैं। अच्छा जी, रात के 10 बजे आपके, ठीक है। जी मेरा ये क्या है, मेरा वक्त पूरा हो गया, उसके बाद करूँगी इंशाल्लाह। बिल्कुल करूँगी, अगर आप लोग कहेंगे तो करती रहूँगी, क्योंकि ये तो अभी तो मेरा टाइम होने में बहुत देर है जी। अभी तो बहुत देर है हमारा 4000 घंटे पूरे होने में। लेकिन अब जो जो चल रहा है ना आजकल चक्कर, उससे डर भी लग रहा है बहुत। इसलिए मैं टाइम तो पूरा कर रही हूँ, लेकिन मैं लिंक से डर रही हूँ। कोशिश कर रही हूँ कि मुझे जहाँ तक जिसके पास जाना है ना, मैं उनका नाम लूँ, उसको सर्च करूँ और वहाँ पहुँच जाऊँ। क्या ख्याल है आपका? ये ज़्यादा सेफ नहीं है? क्योंकि 4 दिन हो गए हैं, 4 रातें, वो आते हैं और ले जाते हैं, आते हैं और ले जाते हैं। 160 गिरे हैं मेरे। अब वो कैसे, हर हर रोज़ यही हो रहा है। ऊपर जाते हैं, रात को आके तो फिर वो ले जाते हैं। बुशरा परवीन गुड लक कह रही हैं, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आप आई, आपने हमारे साथ इतनी देर स्टे किया, बहुत शुक्रिया। अच्छा लगता है जब आप लोग आते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है मुझे। इससे अच्छा क्या हो सकता है कि हम अपना लंच जो है अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। इंटरनेट भी लगता है थोड़ा सा ठीक हो गया है, शुक्र है। अभी 7 फ्रेंड्स हमारे साथ हैं। इफ़ यू आर स्टिल हियर, आप हमें मैसेज करते जाएं। वैसे भी हमने 1:30 पे बंद कर देना है। 10-15 मिनट्स हैं हमारे पास, गप्पे शप्पे मार लेते हैं। जी वरीड नहीं हूँ, लेकिन जी बेशक बेशक सही कह रही हैं। गॉड इज ऑलवेज विद यू जी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, वो एक सर्टन नंबर से नीचे नहीं जा रहा अभी तक, अल्लाह का शुक्र है। वापस वहीं आकर रुक जाता है। तो अल्लाह करे कि ऐसा ही रहे, लेकिन समझ नहीं आ रही ना कि हो क्या रहा है। जितने फ्रेंड्स आते हैं नंबर ऊपर तक जाता है, उसके बाद फिर वो सुबह उठते हैं तो फिर वो नीचे वहीं पे आ गया होता है। बस दुआ में याद रखा करें, आपको पता है जितना मुझसे हो रहा है वो तो मैं कर रही हूँ। आप लोगों को अगर मेरी कुकिंग अच्छी लगती है और आप आते हैं देखने के लिए, उसका बहुत 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 शुक्रिया, मुझे सपोर्ट करने का, मेरे साथ रहने का। मैं साथ खा भी रही हूँ, इसलिए मुझे एक्सक्यूज करें। हम्म
ये इतने मज़े की चीज़ है कि आप जब खाना शुरू करेंगे, मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ, आप खाना शुरू करेंगे, आपसे स्टॉप नहीं होगा। इतना मज़ा आएगा कि आपका दिल करेगा कि आप खाते जाएं। बैड मैनर्स होते हैं कि होस्ट जो हैं वो अपने मेहमानों के सामने खाते जाएं, लेकिन क्या किया जाए। आप सब इतनी दूर हैं कि मैं आपको तो खिला नहीं सकती। बस इंशाल्लाह चंद मिनट और मेरा साथ दे दें, उसके बाद फिर हम इसको बंद कर देंगे। इंशाल्लाह फिर मंडे को जब वापस आएंगे तो आप बता दें कि मंडे को आपका क्या खाने को दिल कर रहा है, वही बना लेंगे। फिर कोई अच्छी सी चीज़ मज़े की जो हेल्दी भी हो और 1 घंटे में बन भी जाए। मेरा वो एक छोटा सा बच्चा वो आज स्कूल में है, बेयर्स, उसने कहा था पास्ता बना लें, कोई सिंपल सा पास्ता बनाएं। आज वो यहाँ नहीं थी इसलिए फिर मैंने पास्ता नहीं बनाया। लाहौर वन कह रहे हैं होस्ट में जाऊंगा खाने आपके एड्रेस बता। अच्छा ठीक है, आप मेरी कम्युनिटी पे मैसेज कर दें। लाहौर वन, अगर आप मेरी कम्युनिटी के ऊपर थोड़ा सा मैसेज छोड़ देंगे ना, तो मैं वहां से फ्रेंड्स भी आपको फॉलो कर लेंगे, और जिसने, बल्कि मेरा ख्याल है ये ज़्यादा अच्छा तरीका है। आप मेरी कम्युनिटी पे छोटा सा मैसेज एक छोड़ दें, तो वहां से इंशाल्लाह बाकी फ्रेंड्स भी आपको देख लेंगे और आपको मेरा वहां से मिल जाएगा। मेरा जो है ना, जो नजर आ रहा है ना आपको, मेरा डीपी जिसको आप बोलते हैं, डीपी बोलते हैं ना, उसके ऊपर जब आप राइट क्लिक करेंगे ना, तो आपको देता है कि आप मैसेज को कॉपी कर रहे हैं, तो वहां से आप एड्रेस कॉपी कर लें। ठीक है, जबरदस्त, बहुत अच्छे। हाँ जी। आप आ जाए, मोस्ट वेलकम। आप जो हमारा खाना वहां बना के खाएं, आपको यही मजा आ जाएगा। वैसे ये अफ्रीका का खाना है, आज हमने अफ्रीकन खाना बनाया है। हमारे बचपन का फेवरेट खाना था ये, बचपन हमारा वहां पे गुजरा है, तो वहां का खाना था ये, बहुत ही मजेदार। घरों में भी बनता था और मार्केट में भी सेल करते थे स्ट्रीट फूड के तौर पे ना, तो बचपन में खाते थे, वो एक टेस्ट जहन में रह गया है। बहुत ही मजेदार है, बना के आप जिसको खिलाएंगे वही आपको आपकी तारीफ करेगा कि बहुत मजा आया। अच्छा, आप ज्यादा दूर नहीं है, दैट्स गुड। हाँ, जबरदस्त। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो। सही सही सही। आज भी हमने हेल्दी खाना कर दिया ना। शकरकंदी भी अच्छी होती है, स्वीट पोटैटो इज बेटर देन रेगुलर पोटैटो, और उसके ऊपर हमने सॉस भी मज़े की डाली है। और फिर हमने क्रैनबेरी का जूस लिया, जो वो भी बहुत हेल्दी होता है। तो फ्राइडे है लेकिन मज़े का खाना बन गया है। आपको भी कुकिंग का बहुत शौक है, तो फिर आप आ जाया करें हमारे लंच आवर में। आप लंच आवर में आके तो देख लिया करें कि क्या बन रहा है। अच्छा ठीक है। अच्छा अच्छा ठीक है। ऐसे ही आती है कुकिंग, तजर्बा करने से ही आती है। कहीं से जब बाज लोग जाके सीख लेते हैं, कॉलोनरी स्कूल में जाते हैं सीखते हैं, और बाज लोग जो हैं मेरी तरह के, वो खुद ही तजर्बे करके तो वो सीख जाते हैं। मैंने खुद ही सीखा हुआ अपने शौक से।
अच्छा ठीक है, खुदा हाफिज बाजी बुशरा। बुशरा परवीन जा रही हैं, अल्लाह हाफिज। शुक्रिया आने का और इतनी देर मेरे साथ स्टे करने का। अब वैसे भी 5 मिनट रह गए हैं, 4 मिनट रह गए हैं, ठीक है। तो 4 मिनट में हम इस लाइव को बंद कर देंगे। वो भी इस किचन भी चले गए हैं, उनको भी जॉब पे जाना था, उनकी उधर से कॉल आ गई होगी जॉब से। और बाकी जो फ्रेंड्स हैं उनको भी मैं बता दूं कि कुछ मिनट्स रह गए हैं, उसके बाद इंशाल्लाह हम इसको बंद कर रहे हैं। मेरा तो लंच हो गया आपसे बातें करते करते। अच्छा ठीक है, 12 बजे न्यूयॉर्क टाइम पे स्टार्ट हो जाता है। 1:40 पे हम बंद कर देते हैं। सिर्फ लंच ब्रेक में आके खाना बनाते हैं मैं, और उसके बाद फिर वापस चली जाती हूँ अपने काम पे। सॉरी, कॉल आ रही थी दरमियान में। ठीक है, अब चंद मिनट रह गए हैं। अगर किसी ने कम्युनिटी पे मैसेज नहीं किया तो आप प्लीज मेरी कम्युनिटी पे मैसेज कर दें, मैं इंशाल्लाह वहां से देख लूंगी। आपने कम्युनिटी पे मैसेज कर दिया लाहौर वन? आप जरा मेरी कम्युनिटी पे मैसेज छोड़ दें ताकि बाकी फ्रेंड्स भी, क्योंकि इस वक्त मैं लिंक नहीं लगा रही, तो बाकी भी जो है ना वो वहीं से आपका लिंक जो है वो देख सकते हैं। हाँ, मैं जा रही हूँ कम्युनिटी पे देखने के लिए कि वहाँ पे किस फ्रेंड्स ने मैसेज छोड़ा है। जिसने मैसेज नहीं छोड़ा वो प्लीज मैसेज छोड़ दें ताकि हम आपको वहां से फॉलो बैक कर सकें। एक छोटा सा मैसेज यहाँ पे छोड़ देना अच्छा लगता है। 2 मैसेज है मेरे पास सिर्फ। किसका है मैं देखती हूँ। अच्छा, सुफियान अकबर का मैसेज है उसमें, और नसरीन किचन का है। लाहौर वन, आप भी जरा वहां पे मैसेज कर दें प्लीज। अच्छा, पाकिस्तानी टाइम 9 PM है, ठीक है, ओके। हाँ जी, आप मैसेज कर दें कम्युनिटी पे। और भी अगर कोई फ्रेंड जो भी हमारे साथ हैं लेकिन वो चाहते हैं कि हम आके आपकी वीडियो देखें तो फिर आप अपना मैसेज वहाँ पे छोड़ दें। मैं फिर आऊँगी जिस वक्त मुझे थोड़ा सा टाइम मिलता है, तो मैं इंशाल्लाह वहाँ से आपकी तरफ आके तो आपके मैसेजेस, आपकी वीडियोस को देखूंगी इंशाल्लाह। आप भी ऐसा ही किया करें, आप भी जरूर वीडियो देखा करें सबकी। अब तो हमें सीख लेना चाहिए कि हमें सिर्फ लेटर नहीं देना होता, हमें वीडियो देखनी होती है, उसके बाद रेड बटन को टच करना है। अगर आप फ्रेंड्स मेरी बात सुन रहे हैं यहाँ पे हैं तो प्लीज़ एक नोट कर लें, क्योंकि मुझे किसी ने सिखाया था और बहुत अच्छा सिखाया था कि आप पहले वीडियो देखें। उस वीडियो जब आप 2-3 मिनट की देख लें तो फिर आप लाइक जो है उसको करें प्रेस। और जब आपकी वीडियो भी देख लिए, लाइक भी कर लिया, उसके बाद आप रेड बटन को प्रेस करें और फिर घंटे को करें, तो फिर आपका पक्का हो जाता है। तो अगर आप किसी की वीडियो देखते ही आप उसको लाइक कर देंगे, अभी शुरू भी नहीं हुई, तो वो वाईटी वाले जो है उसको उठा के फेंक देते हैं फिर। ठीक है, वो कहते हैं कि इसने देखे बगैर कैसे उसको पसंद कर दिया। अब ये चक्कर चल रहा है, ठीक है। तो पहले देखनी है 3 मिनट की, एटलीस्ट 2.5 से 3 मिनट की देखें, फिर लाइक, फिर रेड बटन, और फिर घंटी। इस तरतीब से अगर हम करेंगे तो फिर हमारा काम जो है वो पक्का होगा। ऑलराइट जी, किसी ने गोरमे गलोर है हमारे साथ। सना जी, आप थोड़ी सी फिर लेट हो गई आज। देखिए, हमने इतने मजे का डिश बनाया है। हमने आज अपना फेवरेट अफ्रीकन डिश बनाया है जो मैं बचपन में खा के बड़ी हुई थी। शकरकंदी है और उसके ऊपर सॉस बनाई है हमने टोमेटो की, और खट्टी खट्टी सी मजे की। और उसके अंदर हमने फिश डाली है, टूना का कैन डाले हैं 2। बहुत मजे का बना है। इंशाल्लाह मैं लेटर लिंक भी पोस्ट कर दूंगी सना जी, तो फिर आप देख लेना।
अगर किसी ने अभी मेरी लाइव स्ट्रीम को थम्स अप नहीं दिया तो प्लीज दे दें, थैंक यू, बहुत खुशी होगी मुझे। अच्छा, लाहौर पाकिस्तान कह रहे हैं कि उन्होंने कर दिया है कम्युनिटी पे मैसेज, थैंक यू वेरी मच। मैं भी इसको रिफ्रेश करके देख लेती हूँ, अगर नहीं आया होगा तो मैं आपको कहूंगी कि फिर दोबारा कर दें। एक सेकंड मैं जरा चेक कर लूँ, अगर मैसेज आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, मैं आपको फॉलो बैक वहां से कर सकती हूँ। जी, जबरदस्त, आ गया आपका मैसेज, ठीक है। और भी अगर किसी फ्रेंड ने कम्युनिटी पे मैसेज छोड़ना है, वो चाहते हैं कि मैं आके उनकी वीडियो देखूं, तो जो फ्रेंड्स मुझे देख रहे हैं या सुन रहे हैं, वो कम्युनिटी के ऊपर दे कैन लीव अ स्मॉल मैसेज फॉर मी ऑन माय कम्युनिटी अंडर द लेटेस्ट पोस्ट आई हैव फॉर टुडे। जो लेटेस्ट पोस्ट है उसके नीचे छोटा सा मैसेज छोड़ दें, तो वहां से फॉलो बैक करके मैं आपकी तरफ आऊंगी इंशाल्लाह और आपकी वीडियो को देख के जाऊंगी, क्योंकि हम सबको वॉच टाइम चाहिए। तो इस तरह कर दिया करें इंशाल्लाह, फिर इजी हो जाता है और याद भी रहता है ना। इस तरह मुझे याद भी रहता है, जो मैसेज छोड़ देता है फिर मुझे याद है कि मैंने उधर जाना है। जी जरूर लगाइएगा, हम न्यूयॉर्क में हैं। सना आपने क्या बनाया आज? अच्छा, आपने देखा है, आप आप देख रही थी सना जी? मैंने समझा आप आई नहीं है। बस वहां प्रोफाइल से लिंक लेके यहाँ आना इजी हो जाता है, आप मेरे किचन में आ जाते हैं स्ट्रेट। आ जाए करें, ऐसे अच्छा लगता है। आपका क्या टाइम है इंडिया का? आपकी भी रात होगी, आपके भी 9-10 बज रहे होने। गोरमे गैलोर जो हैं, शेफ सना जो हैं, ये इंडिया से हैं, और लाहौर वन जो हैं वो तो उनके नाम से ही लग रहा है कि वो लाहौर से हैं, लाहौर पाकिस्तान से हैं। आते ही इन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया था, पाकिस्तान जिंदाबाद। और हमारे साथ बाजी बुशरा हैं, वो भी हमारे साथ हैंग आउट कर रही हैं या चली गई हैं, जा रही थी अभी। बस जी, अब तो टाइम हो गया, ठीक है, 1:33 हो गए। नाउ आई एम गोइंग टू क्लोज द लाइव। इंशाल्लाह आई विल सी यू गाइस ऑन मंडे वीकेंड पे मोबिस किचन। इफ एनीबॉडी वांट्स टू नो कि अपने अपने अपनी वेबसाइट को, अपने चैनल को, हाँ वेबसाइट को नहीं चैनल को अपने कैसे इम्प्रूव करना है, तो आप मोबिस किचन पे सैटरडे को लॉग इन कर लेना। वो लाइव होंगे 3 आवर्स के लिए, वो हमारे चैनल्स को देखते हैं और फिर हमें बताते हैं कि हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, साथ वो कुकिंग और बेकिंग भी करते हैं। ठीक है, तो कल इंशाल्लाह मोबिस किचन में मुलाकात होगी आपसे, न्यूयॉर्क टाइम के कैनेडियन टाइम के मुताबिक 11 बजे दिन के, ठीक है। लाहौर वन पाकिस्तान आप भी आइएगा, तो आप देखें कि मोबी कैसे सारे चैनल्स जो हैं उसको एनालाइज करते हैं और हमें बताते हैं, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज। बाय एवरीबॉडी, बाय बाय, खुदा हाफिज, सी यू लेटर, रब रखा।